हेलो एंड वेलकम, यू आर वाचिंग बिजनेस टुडे। आप देख रहे हैं बाजार टुडे और मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। गीतू मोजा है मेरे साथ, कंसल्टिंग एडिटर बीटी टीवी। और आज का सबसे ज्यादा जो बड़ी खबर है जिसके ऊपर सभी की नजर है वो है स्टॉक मार्केट्स पे भारी गिरावट और जो यूक्रेन रशिया क्राइसिस वॉर सिचुएशन की वजह से हुए हैं। तो इस तरीके की गिरावट को आप कैसे समझें, निवेशकों के लिए इसमें क्या लेसन हैं, क्या इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए या फिर एक थ्रेट की तरह देखना चाहिए, इन सभी बातों पर होगी चर्चा। और कि तुझे हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है कि तुझे आपका इस खास शो में। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ, जो ये यूक्रेन रशिया का ओवरनाइट क्राइसिस इमर्ज हो गया, एस्केलेट हो गया, शुरुआती तौर से ही ऑलमोस्ट एक ब्लड बाथ की तरह मार्केट्स में गिरावट देखने को मिली है ऑल अक्रॉस। कैसे देख रहे हैं आप इस गिरावट को? साक्षी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अब मार्केट को ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा, बट नाउ दैट इट इज पैन्ड आउट, एक नीजर्क रिएक्शन हमको ग्लोबल मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। साथ में ही हमारे बाजारों में भी एक शार्प फॉल देखने को मिला। और अगर निफ्टी की बात करें तो अब हम हाई से करीबन 13% नीचे आ चुके हैं। सेंसेक्स भी उतना ही नीचे है। स्मॉल कैप इंडेक्स जो है करीबन 23% नीचे आ चुका है अपने ऑल टाइम हाई से। वहीं अगर मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो वो करीबन 20% नीचे आ चुका है ऑल टाइम हाई से। आप इसको एक अपॉर्चुनिटी नहीं कह सकते इस समय, क्योंकि अभी भी अनसर्टेन सिचुएशन बनी हुई है। आगे सिचुएशन कैसे पैन आउट करती है, कितना लंबे समय तक ये जो इन्वेजन है ये चल सकता है, क्या डिप्लोमेटिक रिलेशंस ओपन करने के लिए कुछ डायलॉग शुरू होता है या नहीं होता है, इस पे सब निर्भर करेगा। लेकिन निफ्टी का एक क्रूशियल लेवल जो ब्रेकडाउन हमने आज देखा है 16,400 का, ये बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट लेवल रहा है मार्केट्स के लिए। यहाँ से हमने काफी समय बाउंस बैक भी देखा है मार्केट में, लेकिन अब ये सस्टेन नहीं कर रहा और 200 पॉइंट उससे भी नीचे आ चुका है। तो मैं ये कहूंगी कि अभी पैनिक सिचुएशन बनी हुई है, लेकिन घबराइए मत। ऐसा नहीं है कि आपको बेच के सब निकलना है। आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आप होल्ड करिए, इस सिचुएशन को थोड़ा सेटल होने दीजिए, उसके बाद ही कोई, अगर आपको कुछ नए शेयर खरीदने हैं, क्वालिटी शेयर्स खरीदने हैं, उसके बाद ही आप खरीदिएगा। लेकिन दिस टाइम सिचुएशन इज लिटिल क्रिटिकल। एवरीबडी इज वॉचिंग आउट व्हाट द नेक्स्ट स्टेप वुड बी। यू नो अबाउट द क्रूड प्राइसेस, वहां पे हमको एक उछाल देखने को मिल रहा है। $105 प्रति बैरल के आसपास आ चुके हैं। गोल्ड में एक सर्ज आ चुका है। तो ऑल्टरनेट एसेट्स आर सीइंग सम काइंड ऑफ अ बाइंग बिकॉज दे आर सेफ हेवन। सो सेफ हेवन स्टेटस जब इनको मिलता है तो थोड़ी बहुत वहां पे बाइंग चलती है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि आप यहाँ इक्विटीज में सब बेच के निकल जाए और आप कमोडिटीज की तरफ, गोल्ड की तरफ या क्रूड की तरफ जाए। सो इट्स अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। Sit on the investments that you have made for long term. Do not panic. Absolutely. Do not panic. That is the key takeaway. Even if we have seen a 2,700 point of a cut today, let me, for all our audiences, for their benefit, tell them what exactly have we seen at closing levels today. So at close, 2,700 points gone on the Sensex. We've seen it slipping by 4.7%, 54,529, the closing level. The Nifty was down by over 815 odd points, or down close to 5% at 16,248. Now look at the advance and the decline ratio, the market breadth right now. Only 240 shares advanced throughout the markets, whereas over 3,000 shares declined in trade today. In fact, all the Nifty 50 stocks ended in the red. All the sectoral indices were down by 3 to 8%. So it was a broad-based sell-off all across as well. I wanted to ask you also on India VIX. We've seen it spike over 32 levels also today. What does it really indicate? That, the sell-off may also escalate from here on deeper, despite the fact that we've already seen a 13% correction on Nifty, like you pointed out? India VIX points to the volatility that markets are expecting and are witnessing on the same day, but this kind of a volatility is expected to continue in the near term. Okay. So all depends upon how situation pans out. Sakshi, we have to, now it's a day-to-day basis affair. And for the long-term investor, he will have to watch how the situation is panning out. Can we see a fall from here? Nobody can say that, but yes, if we have a breakdown from 400 levels for Nifty, we can expect markets to move down around now 16,000 levels also. अभी तो कुछ हुआ नहीं है. Basically, everybody is in wait and watch situation. But if the margin calls kick in, then the markets may see another bout of selling and a fall. But for now, I would say that it's a wait and watch situation. One has to be on the sidelines to see what really pans out.
Absolutely. I also wanted to understand from you that, before the Ukraine-Russia crisis really escalated, the markets were already facing some kind of a headwind, be it on the way of rising crude oil prices or inflation or the imminent interest rate hikes right there. So I want to understand of the fall that we've seen today, would you give the entire, credit to Ukraine, Russia, or do the other factors also have a part to play, or all of that is now penciled in? How are you looking at this? For now, if we say that all of it is penciled in, that would not be right, because yes, the fall that we have seen from 18,600 levels to nearly 16,700 levels, that was market was discounting the interest rate hike scenario that we would see with the March FOMC policy in place. But the fall that we saw today, Sakshi, is entirely being credited to what is happening in Ukraine. Okay. So we can say that both the factors as of now, if the situation remains status quo, have impacted in the price as far as the Nifty and Sensex equity markets are concerned. But what situation pans out tomorrow in Ukraine would certainly impact the markets in short term. I'm telling you, crude prices at 105 is a concern in short to medium term. May not be in long term, but say for next 3 to 4 months, if the situation does not cool down, it is a concern. Long term, it may not be a concern, because then you have a shale gas operation starting and the crude supply coming in from there. And then you have US-Iraq nuclear deal also on the cards. So the supply would ease if that deal goes through. So for near term, the concern remains as far as the crude is concerned. But in long term, we can't say that. For markets that they have discounted entirely everything, maybe they have discounted the FOMC part of it, the Fed beat and the rate hike. But whatever happened today is just because of the Ukraine crisis and the crude surging, which would lead to inflation bump in every part of the world. Right, absolutely. Another concern today, of course, investors are looking at these big headlines, 13 lakh crore rupees of market cap gone. So they have lost a lot of wealth today. Now, also another point is that a major part of these investors is the new investors who entered the market in just the last 1 or 2 years, when we saw the dip happen or the crash happen in March 2020. And after that, we saw this influx of new investors. Now, this is perhaps one of the few times where that they have seen a sharp correction in the markets. Do you fear that these new set of investors will, run away from the markets looking at this crisis and perhaps may destabilize the markets? Already we are seeing FII sell-off continuing, so this may be an add-on as well. There's a learning to it, Sakshi, if we say that crashes are part of markets. The new investors who have entered post-2020 would not have seen such crises really happening. और उनके लिए एक सीख है, उनके लिए ये सीख कि अगर आपका 100 रुपए मार्केट सरप्लस आपके पास पड़ा हुआ है, सभी पैसा इक्विटीज में मत डालिए. एलोकेशन प्रॉपर होना चाहिए. आपका कुछ पैसा गोल्ड में, कुछ पैसा प्रॉपर्टी में, कुछ पैसा आपके डिफरेंट एसेट्स में एलोकेट करिए. कुछ एफडी में डाल दीजिए, कुछ म्यूचुअल फंड्स में डाल दीजिए. आप 100 रुपीज में से 100 रुपीज इक्विटीज में डालेंगे और ये सोच के कि मेरे को इतना प्रॉफिट होगा और मैं इसका डबल कर दूंगा या 4 गुना कर दूंगा, मार्केट तो ऊपर ही जाती है, 2 साल में ऊपर ही जा रही है. ऐसा नहीं होता. करेक्शंस आर पार्ट ऑफ मार्केट्स एंड यू हैव टू डील विद देम वेरी पेशेंटली. If you are a new investor, you will not be forced out of markets because आपका तो portfolio ही उड़ गया होगा. Absolutely. So you have to be a little calculated. You have to be a little aware of the fact that you can't say that markets always go one way. There have to be corrections, and corrections are healthy. But these kinds of events do not happen on daily basis. Yeah, these are one of the events that happen in so many years. Like COVID was there. And we saw a crash, and that gave you an opportunity to really pick up stocks. तो ओवरऑल सभी इन्वेस्टर्स के लिए मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस वक्त सबसे सही स्ट्रैटेजी क्या है. मार्केट से अभी फिलहाल दूर रहने की सलाह आप देंगे. साथ ही साथ अगर मेरे पास कुछ पैसा है तो मैं वो पैसा बचा के रखूं या फिर मैं थोड़ा गोल्ड में डाल दूं. इस समय क्या स्ट्रैटेजी बेहतर रहेगी मेरे लिए? इस समय साक्षी वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी बेहतर रहेगी जब तक मार्केट स्टेबलाइज नहीं होते, चाहे वो आपका कमोडिटी मार्केट है, क्रूड हो या गोल्ड हो या इक्विटीज हो. इस समय बहुत ही अनसर्टन टाइम्स है. ये टाइम्स को थोड़ा संभलने दीजिए.
थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी मार्केट्स में वापस आए, थोड़ा बहुत सपोर्ट मार्केट को मिले, तभी आप नए स्टॉक्स को पिक करिए। आपका अपना पोर्टफोलियो में एडिशन करना है, लोअर लेवल से बाय करना है, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बट अगर आप बाय करना है तो क्वालिटी स्टॉक्स लाइक टाटा मोटर्स, साक्षी, इट्स डाउन 10% in one day. Today it's down 11%. It's a good opportunity, but who knows what happens tomorrow? So let the market stabilize. Even if it comes and bounces back 2%, it's again down 8%. You know, you have that space to really buy that stock. Yes. Wait and watch. रखिए, कैश पे थोड़ा रुकिए, मार्केट्स को स्टेबलाइज होने दीजिए, उसके बाद आपके जो भी चुनिंदा शेयर्स आपके होंगे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग क्वालिटी स्टॉक्स, आई वुड सजेस्ट डू नॉट गो इनटू मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स डायरेक्टली। जी, मैं एक्चुअली यही पूछने वाली थी आपसे, क्योंकि मिड और स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, अपने हाई से 20-25% तक नीचे हैं। तो ऐसे में कई लोग टेम्प्ट हो जाते हैं कि ये तो बहुत सस्ते में मिल रहे हैं तो मुझे खरीद लेना चाहिए, तो उस वहां पर आप क्या सलाह दे रहे हैं? साक्षी, बहुत सारी मिड कैप कंपनीज है जो बहुत अच्छा कर रही है और आगे फ्यूचर में अच्छा करेंगी, तो हमें मिड कैप में भी थोड़ा बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। वही कंपनियां खरीदे जिनका आपको फ्यूचर ब्राइट लग रहा है, जिनका बिजनेस मॉडल आगे अच्छा करेगा। वो कंपनियां खरीदने का कोई फायदा नहीं जिसमें आपको लगता है कि 30% नीचे आ चुके हैं और बाउंस बैक 5% ऊपर चला जाएगा, 10% ऊपर चला जाएगा, वैसा मत खरीदिएगा। खरीदिए वही कंपनियां जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, मिड कैप स्पेस में भी है, स्मॉल कैप स्पेस में भी है, पर quality stocks, I would say that you should buy. Do not get into penny stocks that have fallen 50% and you expect a bounce back of 20% or 30%. That may not happen. So it's better to stick to quality than go for this. Because ये कहा जाता है जब भी falling market होता है ना, तो you have to be more wiser in stock. Because बढ़ते हुए मार्केट में आपका पेनी स्टॉक भी चल जाता है, लेकिन गिरते हुए मार्केट से उभरने के लिए आपको एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी चाहिए, वही उभर पाएगी, नहीं तो बाकी कंपनियां वुड नॉट सर्वाइव। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया गीतू जी, ये सभी पहलू समझाने के लिए कि जो यूक्रेन रशिया क्राइसिस से इम्पैक्ट हमने स्टॉक मार्केट्स पे, क्रूड ऑयल पे, गोल्ड पे देखा है। ऐसे में इन्वेस्टर्स को अपने लिए सबसे ज्यादा सही स्ट्रैटेजी क्या बनानी चाहिए? वेट एंड वॉच का सिनेरियो है, हमें नहीं पता ओवरनाइट किस तरीके की सिचुएशन बदलती है, तो थोड़ा रुक जाइए, इस डस्ट को सेटल होने दीजिए, उसके बाद क्वालिटी फंडामेंटल नेम्स में आप एंटर कीजिए, और ये अटेम्प्ट मत होइए कि पेनी स्टॉक आपको कोई बहुत सस्ते में मिल रहा है तो वहां पर निवेश करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है अगर कोई फंडामेंटल बैक स्टॉक नहीं है आपके पास। तो डेफिनेटली स्टे पुट, अपने कैपिटल को प्रिजर्व कीजिए और डाइवर्सिफाइड रखिए अपना पोर्टफोलियो। यही सबसे ज्यादा बड़े टेक अवेज हैं इस खास इंटरेक्शन के। बहुत बहुत शुक्रिया गीतू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऐसे ही लगातार हम आपसे बात करते रहेंगे, इन्वेस्टर्स को बताते रहेंगे कि कैसे करंट सिचुएशन में अपने आप को बचाते हुए, अपने रिटर्न्स को प्रोटेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच साक्षी। थैंक यू मैम। Thank you. Take care, ma'am. Take care.